In this video, we will discuss about multiple product. Multiple product. Multiple products में क्या होगा? ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा. Okay, so first we take the heading as triple product. Scalar product, dot product, or here we are using the triple product. अब triple product के लिए तो first we take the A part of this scalar triple product. Scalar triple product. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जो डिफाइन होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट विल बी डिफाइन एज ए डॉट बी क्रॉस सी. So A, B, C, B three vectors. So then we are defining scalar triple product as A dot B cross C. अब A dot B cross C, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा कि we take a parallelogram. अब एक पैरेललोग्राम now we draw the parallelogram. So this is the parallelogram. Now on this parallelogram we take this point. So we assuming that this is our A vector. So now this is the B which makes the angle theta. So this is the projection that is A. So we make the angle theta. So here makes angle theta and this is our C. Now, so we give the name as that means this is our vector that means point B coordinate that D, C and here we take as A. Now we take this as O. So OABC. So we use as OA, OB and OC. So we consider a parallelogram whose concurrent edges are OA, OB, OC have the length and direction of vectors A, B, C respectively. So we assume theta be the angle, between A and A कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको A and A कैप. So then A into A cap which is equal to A cos theta. A into A cap equal to A cos theta. So now, so this is the projection of OA along A cap.
when we obtain, we do the next figure, that will be the, so here we use this is theta and this is phi. Here we consider as A. Now, when we calculate the volume, the volume of this we can write down as A dot B cross C. So we consider that is a parallelopiped. So now the volume of a parallelopiped is given by V is equal to area of this thing, and perpendicular to OBDC. So we directly write down this as which is equal to A dot B cross C. तो A dot B cross C. So इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस कैन बी जनरली रिटन एज ए बी सी. तो ए बी सी. So which may be positive or negative as per the acute angle and obtuse angle. So this we can write down as plus minus ABC. So according to the angle theta, which is acute or obtuse. Now, when we obtain the value of A dot B cross C, so how to represent this? अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए बेसिकली, तो वी टेक द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पर क्या है, तीन वेक्टर दे रखे, तो वेक्टर ए हम अज्यूम कर लिया कि जैसे दैट इज A1I प्लस A2J प्लस A3K, और वेक्टर बी विच इज B1I प्लस B2J और प्लस B3K, एंड वेक्टर सी वी कंसिडर C1I और C2J और प्लस C3K. So when we obtain A dot B cross C, A dot B cross C जब हम obtain कर रहे हैं, तो सबसे पहला वे तो हमारा ये है कि आप पहले B क्रॉस C obtain कर लें. तो B क्रॉस C हमें पता है कैसे obtain करना है, फिर हम डॉट प्रोडक्ट करें A के साथ. और डायरेक्टली जब हमें सॉल्व करना होगा, तो B क्रॉस C जैसे ऑब्टेन करना है, तो B क्रॉस C ऑब्टेन करने के लिए हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग. बट व्हेन वी आर डूइंग डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वी टेक ए डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C. और डिटर्मिनेंट 3 by 3 डिटर्मिनेंट वी कैन सॉल्व इजीली. नाउ अब बात करते हैं कि जो हमारी वैल्यू है ए डॉट बी क्रॉस सी, वो इक्वल है ए क्रॉस बी डॉट सी के. तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ए क्रॉस बी फर्स्ट एंड डॉट सी. तो वी हैव द सेम डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स केवल रो चेंज होंगी
पहले आ जाएगा एक क्रॉस बी, देन वी टेक एज द सी, so dot product. Okay, so now we can write down this as same thing, but we can obtain the value of b dot c cross a. Is this remain same or not? ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या, बी डॉट सी क्रॉस है, तो बी यहाँ पे पहले आ जाएगा, बी वन हो जाएगा बी टू और बी थ्री, और सी है तो सी वन आ जाएगा सी टू और सी थ्री, और ए वन ए टू और ए थ्री। अब आप इसको भी वी कैन इंटरचेंज टू रो और टू कॉलम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो दीज आर ऑल्सो रिटन एज A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप वॉल्यूम बी के टर्म में हम बात करते हैं, तो हम उसको अगर ऐसे लिख रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वो भी इक्वल होगा किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए के, और इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के, और ये इक्वल होगा किसके, बी क्रॉस सी डॉट ए, और इक्वल होगा सी क्रॉस ए डॉट बी, और इक्वल होगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी। So now when we talk about here, when we talk about the A cross C dot B, जब हम आप A क्रॉस C डॉट B ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल जाएगा, फिर वो आ जाएगा नेगेटिव साइन। क्योंकि एक साइकिल बन रही है, तो साइकिल में तो ठीक है A B C बी ए, बट A क्रॉस C डॉट B हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस C क्रॉस A डॉट B, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस V। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा सीक्वेंस इस तरीके से आ रहा है कि जैसे ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू B C A, ये A B C हो गया, B C A लिख सकते हैं उसको, और उसको हम C A B लिख सकते हैं, और जब हम उसको A C B लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A C B, तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ, तो दिस गिव्स द नेगेटिव साइन। तो नाउ, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेम वेक्टर है तो क्या स्थिति होगी। अब सेम वेक्टर पर, अब सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर का मतलब है कि अगर A A B, अगर सेम वेक्टर आ रहे हैं, A A B लिख दिया हमने, या A B B लिख दिया, या हमने A C C लिख दिया, या A B A लिख दिया, या A C C लिख दिया, या B B C लिख दिया, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्योंकि अगर ये किसकी वजह से जीरो होगी, ये होगी हमारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से। क्या डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर टू रो आइडेंटिकल है, इफ टू रो आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो। डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो। Okay, so we take one example based on this. To find the volume of parallelopiped whose edges are represented by vector A equal to 2i minus 3j और plus 4k, vector B is equal to I plus 2j minus k, and vector C is equal to 3i minus j और plus 2k. So same, we do the same thing. So when we are going to calculate the volume, the volume is equal to A dot B cross C. So A dot B cross C, A.
we write down a 2 minus 3 or so 4. 1 कोफिशिएंट लिखेंगे, 1 2, और k कोफिशिएंट है -1, तो 3 -1 और 2. So now we obtain this determinant. So this 2 2 ja 4, 4 और माइनस माइनस प्लस -1, माइनस माइनस प्लस 3, ये 3 इसके साथ क्या जाएगा 2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 4, 4 के लिए वह -1 -6, तो 3 2 जा 6 और 3 2 5, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, तो माइनस का 28, तो दिस विल बी द -7. ओके, और नेगेटिव वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, बट -7 आ रहा है, तो वी कंसीडर द पॉजिटिव साइन. तो वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया या एरिया हो गया, इज टू बी टेकन पॉजिटिव, टेकन पॉजिटिव. नाउ we move to the next topic, that is the volume of tetrahedron. Volume of tetrahedron. तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विल बी 1/6. We write an volume 1/6 into ABC. So this is the volume of tetrahedron. So when we are going to obtain the volume of tetrahedron, that will be the 1/6 into ABC. Now स्केलर प्रोडक्ट के बाद जाते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट पर. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स. अब 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स. तो देन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, A cross B cross C, which is equal to A dot C into B minus A dot B into C. Or similarly, B cross C cross A, so this can be written as B dot AC or minus B dot CA. Or next third one, C cross A cross B, so this will be C dot BA minus C dot AB. तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 2 और ये हो जाएगा -1 2 3. तो दिस विल बी इजियर टू रिमेम्बर व्हेन वी आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स. तो सिंप्लीफाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट जब 3 वेक्टर्स का, तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट 2 को सॉल्व कर देंगे, देन वी सॉल्व द थर्ड वन. Now, after 3 vectors, we move to the 4 vectors. So we write down the vector product of 4 vectors. Vector product of 4 vectors. So let A, B, C, D be 4 vectors. Be 4 vectors. So then we find A cross B cross C cross D. अब वेक्टर प्रोडक्ट 4 वेक्टर्स का फाइंड करना है. तो सिंपल है, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? तो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट को हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी. तो लेट वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर एम. इसको हमने मान लिया वेक्टर एम. सो नाउ, so vector m dot c cross d. So when we do the cross product, okay, we do the cross product.
So we write down the above form. So m dot d into c, और माइनस m डॉट c इंटू d। तो m डॉट d इंटू c, इसको क्या लिख सकते हैं? तो m क्या है हमारा? m तो a क्रॉस b है, तो ये हो जाएगा हमारा a क्रॉस b, और डॉट हो जाएगा d, और इंटू में आ जाएगा c, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? a क्रॉस b और डॉट सी, और इनटू में आ जाएगा डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? दिस कैन बी रिटन ए बी डी इंटू सी माइनस, और दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी इंटू डी। सो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, मतलब फोर वेक्टर का प्रोडक्ट। So similarly you do the other things, that means when we change the variables, मतलब ए बी सी डी की जगह पे और कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, तो वी कैन राइट डाउन। Now we move to the reciprocal system. Reciprocal system of vectors. So reciprocal system of vectors. For reciprocal system, so reciprocal we defined as A dash, B dash and C dash. So then A dash, A dash equal to B cross C upon ABC. B dash is equal to C cross A upon ABC, और C dash which is equal to A cross B upon ABC. So reciprocal of vectors. So we define as vector B cross C. रेसिप्रोकल के लिए प्रॉपर्टी पता ही होंगी आपको। अगर वेक्टर ए का डॉट ए डैश से करेंगे रेसिप्रोकल, तो दैट गिव्स अस वन। सिमिलरली फॉर बी, बी डॉट बी डैश इज ऑल्सो वन, और सी एंड सी डैश ऑल्सो वन। So this is equal to C dot C dash. This is also equal to 1. Now अगर हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर A डॉट बी डैश, ए डॉट बी डैश की क्या वैल्यू होगी? वेक्टर A डॉट बी डैश क्या है हमारा? ये है हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। अब देखिए ए डॉट दिस कर रहा है, अब ए का डॉट कर रहा है किसके साथ? इसके साथ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ए सी ए आ जाएगा, और ए सी ए अपॉन ए बी सी आ जाएगा। अब ए सी ए मतलब दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए इसमें, तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं बी डॉट सी डैश कर सकते हैं, और सी डॉट ए डैश, वी कैन ऑब्टेन ऑल द वैल्यूज। So these are the multiple products. That means basically we say that the scalar product of three vector, vector product of three vector or four vector.